अस्सलाम वालेकुम जी, ज़राखान के व्लॉग में बहुत बहुत खुशामदीद। बाकू के ओल्ड सिटी में खड़ा हुआ हूँ और जैसे हर बड़ा शहर जब भी हिस्ट्री में रहा है उन सब के ओल्ड सिटीज़ होते हैं, जैसे लाहौर है, फ्रांस है, ये वो उनके फ्रांस के अंदर पेरिस है, सबके ओल्ड फोर्टिफाइड सिटीज़ रहे हैं। इसी तरह बाकू भी एक बहुत पुराना कदीम शहर है और इसकी सकाफत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है, इसलिए इसका भी ओल्ड सिटी है और वो भी फोर्टिफाइड। आइए हम लोग देखते हैं कि इधर क्या क्या चीज़ें जो है वो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो चीज़ें मुझे पता है लेकिन बाकी मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ आप लोग के साथ। लेट्स गो। Tower in the Baku and there's had some different assumption about the history and what it was used. So in even all 5 currencies you can see the picture of the Maiden Tower. You can see two different designs in the tower. First design was built during the 5-6 centuries, and in the top of the first floor was found the 5 remains of fire. So people believe that it was used as a Zoroastrian religious people. Another assumption in that, in the 12th century, they add the second floor. And this connection with first floor and second floor was rope. So when around in here was some war, people usually hide inside this tower. They get up the second floor with rope, and when they get in there, they cut the rope so no one can get enter. Oh. Another assumption is that this tower was used as a lighthouse by ships. Because guys, Caspian Sea in the 12th centuries was around in here. Year by year, Caspian Sea moved far away. So ships used this tower as a lighthouse too. Final assumption is this tower was used as an astrology research by the scientists in that time. They researched the sky from top of this tower. Now we know that this museum, it's exactly we know, and inside is 8th floor. In the top of this tower, you can see the view of the old town. Some Formula 1 race games, maybe you heard about that. Yeah. It happens around this road. Some people, they're just buying the ticket to film the tower in the top because you can watch the race games from these areas. In that part, this is the modern part of the Baku. Flame towers. The shape of the flame towers looks like a fire. Why is that? Azerbaijani name actually for the meanings comes from the fire land, and our nicknames in here land of fire. So during the construction, government specifically wanted to make something unique that the architect will make the shape of the fire. At the night, it's lighting as a fire and also Azerbaijani flag. These are the most highest building in the Baku. Highest one is the 182 meters. And 2 of them business center, 1 of them is hotel right now. And in here you can see the 2 different styles. In carpet, if there is some ornaments like this one, it is usually Turkish style. But if there is some flowers and mix this style, it was mean it is Iranian style. Yeah, Iranian. So because of it is famous, even we have carpet museum. Usually people in the outside, they are having so many little carpets as a souvenir. That's from Multan Caravanserai. This one is Bukhara. Multan is one of the city name in Pakistan. In Pakistan, yeah. Caravanserais in the between 15th and 16th centuries was very famous because Azerbaijan was located in the Silk Road. That reason, people from India and Asia came to the Azerbaijan to stay in here like 4 or 5 days, and then they continued their road to the directly Europe. When they came, they stayed in the caravanserais. They worked as a hotelos, and they opened the bazaars in here. अच्छा, अभी मैदान टावर आपको दिखाया। मैदान टावर की उसने आपको 4-5 किस्म की अजम्पशंस के बारे में बताया कि क्या क्या जूम किया जाता रहा, कि वहाँ पे क्या था, क्या होता रहता था। उसके बाद फिर एक जगह है जहाँ पे दिखाया कि यार जो बैल्कनीज जो हैं वो वुड की बनी हुई है, और वुड जो अपनी बैल्कनीज वुड की बनाता था, इसका मतलब उसके बहुत पैसे, क्योंकि उस वक्त उस ज़माने में वुड जो है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी थी, ऑयल से ज़्यादा महंगी थी। फिर ये अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है मुल्तान कारवानसराय। ये मुल्तानी लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे अपना कारवानसराय यानी बैठते हैं यहाँ पे, आके आराम करते हैं, यहाँ पे अपने जानवर ले आते थे, इधर ट्रेड करते थे। और इस साइड पे है दूसरा बुखारा। तो जो अपने इंडिया पाकिस्तान वाले थे वो मुल्तान कारवानसराय में आके रहना शुरू हो गए, और ये जो बुखारा वाला जो है उनकी सेटलमेंट्स यहाँ पे हो गई। जो टर्क्स वगैरह आते थे वो यहाँ पे आते थे। चलें मज़ीद जानते हैं इस जगह के बारे में।
Kala. All right. Buyukala means big gate. What does it leads to? This area, in this, like in 18th centuries in Azerbaijan was Nadir Shah Empire. Nadir Shah Empire was in Azerbaijan biggest in our history empire that even our boundaries to reach the Dehli areas. In that time, when Azerbaijani, that Nadir Shah Empire collapsed, and Azerbaijan started to establish little Khanlık. Khanlık is like states. In America, you know that there's a mini states, but in the whole it's America. It was the same in here. That full as Azerbaijan, but inside there was a little states. And Baku states, there was a Baku Khanlık that the Baku kings that in that time lived in this area. So usually in this area was live the Baku Khans. Baku Khans. Khan, yes. Khan, it means king. In Azerbaijan, or traditional music is called mugham. Mugham. And in mugham, we have main instruments. This one in here, it's called tag, Azerbaijani guitar. And it symbolizes happiness. That one in there, it is kamancha. Yes, it is Azerbaijani violin and it is symbolized sadness. Okay. And that one, that Azerbaijani drum. This one is balancing between tag and the kamancha. So when you are listening to mugham, you can feel all these feelings at the same time. In Azerbaijan, during the 17th and 16th, 18th centuries, hammams worked as a really big role in our culture. During the 17th century, 17, 18, 16, that time of period, usually around in here wasn't any cafe and restaurants. For people who wanna hang out together, they bring their foods, drinks, games, music instruments to here, and they spend their time in here. 5 days of the week, it was allowed to men. 2 days, it was allowed to women to came to here. If in the door you will see scarf, that was mean that it is the woman day. If there was a hat, it was mean this is the man day. And we had some tradition about hammams. That time, usually mothers choose bride for their son. So mothers who are looking for a bride, they came to here, and women who wanted to get married, they came here, they meet each other, and if they like each other, it is the most important part. That was mean marriage is coming. Wow. And that area, it is double gate. It was main entrance for the Baku. So someone from the outside who came to the city, they usually sent that person directly first to here, to hammam, to clean and see. To get married. No, clean and see. Okay. For marriage, that time was responsible mothers. They तो ये है इनका 2 मुरिया गेट. यहाँ पे ऊपर गार्ड्स बैठते थे इनके, और शेहवान शाह जो है उसके पास इस गेट के, और एक और एक्सट्रीम पे भी इस तरह के गेट्स हैं जो दूसरी साइड पे निकलेंगे. तो ये मेन एंट्रेंस थी उस वक्त बाकू की, विच वाज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन. तो शेहवान शाह के पास इसके होती थी, चाबी होती थी, और वो डिसाइड करते थे भाई किसने आना है किसने नहीं आना. उससे पहले फिर मैंने आपको वहाँ पे हमाम दिखाया. हमाम का ट्रेडिशन का वही जो मुगल्स का था, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी ना वो पुपियाँ शुपियाँ रिश्ता भी बनाती थी. यहाँ पे लड़के आते थे, लड़कियाँ आती थी, और वो डिसाइड करती थी कि चलो इनका रिश्ता करा देते हैं. लाइक बैक देन फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा वो बताते हैं कि रोल था इनका रिश्ते कराने में. तो इट वाज अ गुड मीटअप पॉइंट वो जो जगह है हमाम वाली. और फिर मैंने आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इनके 3 दिखाए हैं, वो भी आप साथ साथ सुन ही रहे हैं. तो आए मज़ीद चीज़ें देखते हैं. बड़ा मज़ा आ रहा है यार देखने का. ओल्ड सिटी इट्स वेरी मच सिमिलर टू लाइक ओल्ड सिटी, लेकिन आर्किटेक्चर जो प्रिजर्व किया हुआ है और जो टूरिज़म की हुई है, दैट इज़ ऑन सम अदर लेवल. वाकई में सम अदर लेवल. इनका नाम है जी काय नाना. काय नाना का मतलब होता है मदर इन लॉ. और मदर इन लॉ कहते हैं कि यार इनका ना हर वक्त कॉम्पिटिशन चलता है मदर इन लॉ और जो डॉटर इन लॉ होती है उनमें से कौन अच्छा खाना बनाता है, इसलिए उसके नाम पर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है. एंड दिस इज सलाम बाकू विच इज़ अ फेमस रेस्टोरेंट. साइड पे ओल्ड मंगल है, पीछे पूरा देख रहे फोर्ट बना हुआ है, ज़बरदस्त. ये बिल्डिंग जो है ये मुसन्नगीफ एक बंदा था उससे बनाई थी, और इसको कहते हैं स्माइल. ये बिल्डिंग अभी ये इनकी बिल्डिंग जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती है उसके लिए चलती है. तो ये उसने अपने बेटे के मरने पे बनाई थी. शाहजहां कुछ सीखो, तुम अपनी कुड़ियों के पीछे बनाते रहे हो ना, बस अपने बेटे के लिए बनाई थी. क्या बिल्डिंग है यार, कमाल. और फिर उसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंट इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन रही है. उन्होंने अपने आके स्टोन्स लगा लिए,
और कहते हैं अंदर यानी इसके स्टोन्स की वजह से अंदर सर्दियों में गर्मी होती है और गर्मियों में सर्दी हो जाती है, इस तरह का स्टोन अंदर लगाया है। ये मैं भी अंदर वाली स्ट्रीट से आ गया। अंदर वाली स्ट्रीट यार बहुत ज़्यादा अंदरून वाली फीलिंग दे रही है, लेकिन उतनी नैरो नहीं है जितनी हमारी है। ये कहते हैं कि ये नैरो इनकी इसलिए थी क्योंकि बहुत विंडी सिटी है। ये देखना अभी भी विंड इतनी चल रही है, इट्स 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लग रहा है जैसे माइनस में है। तो विंड को रोकने के लिए और ताकि जब दुश्मन अंदर जो है वो इन्वेजन करें, वो गुम जाएं, इसको बहुत नैरो बना दिया है। लो जी, बच्चे यहाँ पे भी फुटबॉल खेल रहे हैं, खेडन दे। हमारे यहाँ तो स्ट्रीट्स नैरो इसलिए बनाई थी ताकि फुफियाँ जो हैं वो छतों पे खड़े होकर ना एक दूसरे के साथ बातें कर सकें। इनके रीजंस डिफरेंट थे। राती नू वेख के ना कोई डर लगे नहीं। मुगलों की तरह ना यार इनके भी जो थे लोग वो बड़ा यहाँ पे अपने पैलेसेस वगैरह बनाते थे। ये जी शाहरान शाह पैलेस, वो कोई बिल्डिंग जो है वो अपने लिए रहने के लिए, कोई नौकरों के लिए, कोई कज़न के लिए, बस यही चल रहा है इधर भी। ले जी, ये है शाहरान शाह का पैलेस। अंदर म्यूजियम है, बट द म्यूजियम इज अबाउट टू गेट क्लोज, तो मैं इसकी टिकट नहीं ले रहा है। और ये सामने दिस इज मस्जिद, या इट्स अ मस्जिद, राइट? This one is for them was rolled as a prayer room. This one, but this one in there was in that building inside there is a tombs of the last Shirvan Shah family. Okay. Okay, so this right here is miniature book museum, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह भी। अच्छा, यहाँ पे मेनली क्या है कि जिस मुल्क की बुक्स पढ़ी हैं उस मुल्क का ऊपर झंडा लगा हुआ है और नीचे मिनिएचर बुक्स हैं उस मुल्क की। पाकिस्तान का इधर है, लेकिन जो सबसे छोटी बुक है इस पूरे म्यूज़ियम की वो ये है, माइक्रोस्कोप से पढ़ी जाएगी। ये पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी एंड इजराइल। हनुमान चालीसा है, भगवद गीता है, तसंच पाकिस्तानचा असणार वरती कुराण वगैरे ठेवलं असेल इथे। पूरा अजरबैजान का ये ओल्ड सिटी जो है पूरा हिली है, ऊपर नीचे इस तरह से चल रहा है। दिस रियली मेक्स इट यूनिक और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जगह जगह पे छोटे छोटे म्यूज़ियम्स बनाए हुए हैं और टिकट रखी हुई, ज़ायरा कमाना तो है, लेकिन ये बुक म्यूज़ियम जो है दिस वाज फ्री। चले बाकी And he writes gazelles. Statue of Alaga Wahid. Yes, Alaga Wahid. He writes gazelles. Gazelles is Azerbaijani satiric kind of music. We also say ghazal. Yeah. Yeah. India, Pakistan, we say ghazal. Some personage like in here. Oh, wow. This is showing the wedding. Like men are playing the music instruments, they are dancing in here. Wow. This one are here, the personage and characters from his gazelles. In that area, this shows politics. In the top, there is a politics starting the Soviet Union, but in the down, before the Soviet Union. So you can see the differences between Azerbaijan traditional style. They are funeral. It's once men are taking tomb and women are crying in you, and it's showing like lifestyle in his head. ये देखो जी, ये जो कैसल में से ये जगह निकलती है, इधर से वजदी होंगी तोपें, बंदूक वाओ। जगह जगह पे आपको ऐसे कैफेज भी मिलते रहेंगे, क्वाइट एली। ओके भाई, यहाँ पे मेरा इख्तिताम होता है इस वीडियो का। आपको मैंने अच्छी हिस्टोरिकल सी जगह दिखाई है, कुछ मुझे अपनी लाहौर वाली वाइब आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ से ढेर सारी सोवेनियर्स हैं, इधर से मैं अपनी सोवेनियर शॉपिंग करके जा रहा हूँ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। आप लोग भी अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने मुल्क पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।